Assalamu alaikum everyone. I'm back again with the live session, and today's live session with the Kathbath page. That is her actually official page, and her name is Naveed Bashir. She lives in Australia, and उसका जो कथबात पेज है वो लोगों से इंट्रैक्शन करना, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करना, और मीनवाइल उनका जो मूड है ठीक करना। तो आज हम उनसे बात करेंगे अपने ही सेम टॉपिक पे, विच इज़ अबाउट चाइल्ड अब्यूज़, एंड उनसे रिव्यूज़ लेंगे कि क्या वो सोचती है, क्या उनके व्यूज़ है इस चीज़ को लेकर। तो लेट्स स्टार्ट। एंड किसी की कोई भी क्वेरीज है, वॉट एवर इट इज़, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन एज वेल। सो हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक बात का हम प्रॉपरली हम जवाब दें। एंड लेट्स स्टार्ट विद द लाइव सेशन विद द कथबात पेज। या शी जॉइंड, एंड let's have an interaction with her, and let's talk about the ideas and the ideology behind the child abuse and its consequences, and the same thing which we have done before. So अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, सफदार फ्रॉम कुलगाम। जी सफदार साहब, क्या हाल है आपके? आप ठीक है अच्छे से? I'm sending the request. So अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान, क्या हाल है? आप ठीक है अच्छे से? अस्सलाम वालेकुम। Hi. Assalamu alaikum. Walaikum वालेकुम assalam. अस्सलाम। क्या हाल है? Thank you. I'm good. How are you? Good. Thank you. Good. Thank you. Thanks for asking. How have you been? How is your day going? All good, all good. You say. I'm a bit distracted at the moment because I got a news from. I just received a call from my office, and one of our colleagues had tested Oh, positive for COVID, and I'm oh, like, oh, no. So I'm a oh. bit disturbed and distracted because I Hmm. finished up my Hmm. office. But care a big thing now we have to go with the contact tracing because we were last week, not like couple of days, we were at a Christmas party. So it's like Okay. kiski Okay. shahmat aa gayi. So and Oh sorry, excuse God. me for my and sorry, excuse me for my phones if it will just ping. Ah, it's So sorry okay. for It's the okay. It's distraction. When okay. we get No, 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 emails, no I just issue. check on the messages and stuff like that. So It's excuse me it's for that. it's okay. It's okay. It's okay. Thank Thanks you. for joining me. It's an honor for me Thank you because for having me. Thank you for having me. It's really great, and I really appreciate for the initiative you had taken because I didn't get much time to just research about your hmm, page stuff, but I just hmm, did some hmm, little bit thing. hmm, Then hmm, aaj hmm, when I was in office, so it's really great. I love the way hmm. you are doing, and it's really I appreciate that. So keep well, Thank you keep so doing that much. stuff. We need more people. We need youth like that. But yeah, I wish you good luck for that. थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे जो वीवर्स है मोस्टली वो आपको नहीं जानते, तो लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। तो आप प्लीज अपने Yeah. बारे में उनको बता दें। Yeah, sure thing. Definitely nahi janti honge because it's been a while. I'm out of Kashmir. I'm a Kashmiri though, so yeah. Mesh koshur tagan, so I can speak बिल्कुल बिल्कुल। all this. या Uh, सुच वारे ज्यादा असल अगर ती कोशिश भी करूं। yeah, exactly. But yeah, and I'm really proud of my roots and where from I am. So I'm really हम्म। connected to my roots, and that's what this page is about. Kathbat. I just talk to my कतबा। people when I feel overwhelmed at work or when I just need to take a breath from my work, and I'm like, oh, it's done. It was a bad day or that thing, and they just open my page and then
just chat with people, do cut baat in my own language. Just just comment. Oh So God. yeah, that's a bit about my page. But yeah, people know me jitne bhi hain, but it's thoda sa time difference hai. It's hard to manage a page, but my actual name is Naveed. Now people might be knowing about that. That's fine. So yeah, I'm Naveed. And a little bit of background about myself is I come from an engineering background. I have done my engineering in electrical and electronics back in India. Okay. And then I pursued my master's in business administration, and then now I'm in Australia. I'm not in India now anymore. So I'm an HR manager at one of the companies. So I'm just working here. So yeah, Okay, that's a fine, bit fine, fine. about myself. So cool. So, please speak Kashmiri. Yeah, sure. We will speak in Kashmiri. We will try to. So, yeah. And sorry for the language. I should mix up the language because I feel yeah, it's okay. It's क्योंकि अभी मैंने completely all meeting right. खत्म की, so I'm in English zone, like क्योंकि I was whole Yeah, day yeah, in yeah, meetings. yeah. So just excuse me for that, but yes, I'll try to speak in Kashmiri, Urdu, get the language because I'm happy, although as far as I know that I'm comfortable. Yeah. ओके ओके सो हमारा जो इनिशिएटिव होता है मोस्ट प्रोबेबली हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या चाइल्ड अब्यूज वेट इज वर्बल फिजिकल या इमोशनल और नेग्लेक्टिंग अब्यूज तो आपका हाँ तो इस बारे में कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइल्ड अब्यूज क्या लगता है आपको क्या कश्मीर में मानी जाती है ये टर्म यूज होती है या कश्मीर में या अभी भी वही है क्योंकि यहाँ पे नहीं होता है तो आपके हिसाब से व्हाट आर योर रिव्यूज अबाउट दिस 100%. First thing, my roots are from Kashmir, and I know what situation it's. वो बात सही है कि मैं काफी टाइम से वहाँ पे नहीं हूँ, so you know, but still, and what I know from my family and friends is, well, child abuse is there, was there, and will be there. It's not something. Yeah, what we can do is with awareness we can stop that, but वो है अभी भी है because I speak with my friends and family, and I hear from people. I have heard already as well. It's there. It's very unfortunate, to be honest, but it's there. Especially I talk about first, it's accepting that and identifying what child abuse is, because people don't know. क्या लोग, like, you know, क्या छो बच्चे को तो मारना जरूरी है, MC सुधरी, you बात, you मार is stuff like that. We come up with those, you know, things. But to be honest, या माँ बाप के बीच लड़ाइयाँ होती है, और you know, पहले तो कश्मीर में ये है कि अभी 1 साल के बाद, you know, they have that kid, and वो फिर वो चीजें देखता है जब वो settle down. अभी माँ बाप खुद नहीं हो गए होते as a couple when we talk about it. And then जब घर पे लड़ाइयाँ देखता है, that abuse बीवी के साथ abuse, and it's a male dominating society. Everyone knows about that. बच्चा वही सीखता है, and then it goes that in that traumatic phase लड़ाइयाँ देखता है, और उसमें भी फिर वो चीजें आ जाती है बड़े होके, वो भी एक अब्यूजर बन जाता है जब उसने अपने बाप को वैसे ही he saw his you know father growing, he's growing up with that thing, and then he'll repeat the same. You know, हम what I believe in, हम परछाई है अपने माँ बाप की, because हम उन्हीं माँ बाप की, exactly. We are not coming from उधर उधर. It's like we grow from what we have seen from the culture, what we have been, you know, growing up as. So पहले तो वही हो गया कि घर पे जो child abuse होता है, it's like identifying that what child abuse is. Child abuse is of different types, like it's emotional, it's sexual, it's psychological, like there are different types of verbal, physical, absolutely there are different types. Neglection is also one of the child abuse का एक type, because we have seen अभी जो हमारे parents, most of our parents now are, या अभी जो आगे की generation है, they are all working parents, and they neglect the child. They give the child to the caregivers. They give the child to their foster parents. तो यहाँ पे ज़्यादा है. I won't talk about this culture, which is like it's different completely. It's upside down. What is in here, but yeah. यहाँ पे भी, just to let you know, 2.5 million Australian, I just was going through the data and the records, 2.5 million Australians suffer from child abuse. उसमें से 8.3% experience physical abuse, and 7.5% experience sexual abuse.
So it's everywhere. It's Oh, not कि कश्मीर it's में होता है everywhere. यहाँ It's a पे noble क्या है. cause and it's everywhere, exactly. Yeah, but I think people are more vocal here. If something is happening, they will let their parents know. It's not like Exactly. कश्मीर में क्या है, मेन चीज सबसे बड़ी चीज है just हम like में कम्युनिकेशन गैप है, we are having वो शर्मो you need हया to वाली चीजें bridge हैं. कर and हम्म सबसे बड़ी बात शादियों में आप जब आपके cousins like I have seen हम्म harassment and bullying by your own हम्म cousins, you know, हम्म शादियों में आप जाते हो हम्म वहां पे हम्म या कोई फैमिली फ्रेंड होता है या कोई अंकल जी होते हैं जो आपको बरसों से जानते हैं and you know exactly. छोटा बच्चा होता है तो you know they start हम्म harassing. There's soft and hard touch, you know, there's a difference between हम्म soft and hard touch. Soft touch is like हम्म of a motherly giving touch when you cuddle your child or when you just want to give love हम्म and stuff like that. But hard touch हम्म is something different. एक बच्चे को नहीं समझ आता है शुरू में what that touch was about, but when it's हम्म repetitive then it's like, oh, that was हम्म normal, you know. हम्म There's something bad in that. अभी like I'm an adult, हैंडशेक हम दिन में 10 करते हैं 1000 करते हैं बट यू गेट दैट अगर आप एक बंदे के साथ वैसा हैंडशेक करते हो ना you get that feeling that that was an intentional handshake. It's just we talking about a simple handshake, you know what I mean. So I think कश्मीर में तो है पर प्रॉब्लम ये है कि लोग सुनते नहीं हैं, acceptance. लोग बोलते नहीं है. इट्स अबाउट अच्छा कश्मीर में शादी में काजिन ने कुछ किया, हरेस किया, सेक्सुअली हरेस किया, बुली किया, नसत जगह छाप मैं वंत छाप I'm just wondering, that's so bizarre. Like seriously, why you want to shut? और especially ये नहीं है कि कश्मीर में लड़कों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं होता है. सेक्सुअल हरेसमेंट या हरेसमेंट जो होता है, चाइल्ड अब्यूज जो होता है, वो वो दोनों के साथ होता है. But it's more highlighted in girls because Girls. we are a male dominating society, number one. Number two, girls are not allowed to voice up for themselves. They are just Exactly. shut down. You need to speak up for yourself at the end of the day. You know what I mean? It's like अच्छा अब मैंने ऐसे भी सुना, like I have very close friends and family. It's like master boy, pafter boy, pitter boy. They do certain things, you know, but it's like nakar to someone. It's not badnami. Come on, man, shut up. It's not your badnami. बदनामी उनकी होगी जिन्होंने गलत It's किया. his badnami, हम लड़की को obviously. बोलते हैं नसत से कर छो. I don't know like how many viewers are watching and how many will watch about it. It's like it's not good. It's not appreciating at all. You know, क्यों हम लड़की को बोलते हैं थपका? That's my first point of thinking. And just to let you know, 90% of victims know who their abuser is. 90%. And 9 is the age. It's a median age where usually sexual abuse happens. So उस age पे I think parents need to communicate with your child. They need to bridge that gap in between, like जो are you comfortable with that cousin? Are you doing well? Like talking about sex is not behayai. Talking about giving a moral education, sexual education to your child is not behayai. You're not doing any kind of, you know. But I think wahi hai sharam haya ke par, and especially I've seen, I just don't want to quote in that way, especially some people who just chant about religion, mazhab. वो सबसे ज़्यादा फिर they are more, you know, those abusers and harassment. Nasa actually 5 hajj करमुत. Nasa you should not go in this kind of he can't do that. Why, man? Isn't he sexually active? Why can't he be sexually active? Why can't he do anything? You know, that's weird part. It's horrendous. I would say, like it's seriously horrendous. What's happening in Kashmir? Or joke. I think the solution for that is do not keep quiet. You need to voice with yourself. अपने पेरेंट्स से बात करो. आप अपने पर यहाँ पे तो चलो जो है जैसे यहाँ पे हम स्कूल्स पे जाते हैं या जैसे किंडरगार्टन होता है तो here is because I'm into HR I strategize policies so I kind of know the children's acts. मुझे तो ज्यादा यहाँ का पता है. I'm sorry about I don't know much about India though, but यहाँ पे जैसे laws होते हैं children's acts है 1989 2018 so we have got laws. But यहाँ पे good thing is working with children check. Even I have got that. If you are working in a company, you need to have a working with children check. It's like a clearance thing. कि आपको उसमें आपने जितने अगर आपको बच्चों के साथ काम करना है तो you need to have that working with children check. It's short form WWCC. अगर आपने कोई abuse किया होगा, अगर आपने कोई neglect किया होगा, अगर आपने कोई sexual harassment तो it marks in your card as flag. तो अगली बार next job में और you're just out. You're marked as red flag कि आप काम नहीं कर सकते बच्चों के साथ. So that's something. This is really nice. This is really nice. Yeah. So यहाँ बात आपने सोसाइटी
इट्स That's a ओके, lot इट्स ओके, इट्स actually. कम्प्लीटली ऑल राइट। Yeah, तो यहाँ अपनी बात सोसाइटी या जब भी हमारे साथ कुछ होता है तो हम बात नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम केसेस विच आई हैव सीन, बात हुई है, रिपोर्टेड केसेस आए हैं, लेकिन जब लड़की वोकल भी हो चुकी है, वो बात भी कर रही है, लेकिन स्टिल सोसाइटी उसको बोल रही है यू आर नॉट that's all. विक्टिम, यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक यू नो, कि जब एक केस आया था, रिसेंटली आया था, फादर और डॉटर वाला, या अंकल और आया था, और सिस्टर ब्रदर का भी आया था, तो Yeah, उसमें भी वो जो इसमें उसमें भी जो छोटी बच्ची है या छोटी जितने भी बच्चे हैं, मतलब दे आर लाइक, हमने अगर बात की भी है, अगर हमें मतलब कहीं से वो कॉन्फिडेंस भी चाहिए इस बात को बोलने के लिए, बिकॉज आप ऐसी बात बोल रहे हो जिससे आग लग you need सकती to है, gear up a राइट? lot. You need to have that courage to stand एग्जैक्टली, and to talk about एग्जैक्टली। that. तो उसमें जब आप सोसाइटी आपका जीना हराम कर देती है, जैसे मतलब सोसाइटी का ताना देना लड़की ही गलत हो सकती है, यार बच्चा है, अगर आप एडल्ट की बात करें या बच्चे की बात करें, तो देर इज अ एज डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अगर एक बच्ची अपने बाप के खिलाफ एलिगेशन लगा रही है या कुछ बोल रही है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग, राइट? तो Something. उसके बाद भी सोसाइटी जजमेंटल होके ना, वो लाइक नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बाप ऐसे नहीं कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता है, लेकिन तब तक वो वेट नहीं करते जब तक कोर्ट से कोई प्रूफ ना आए या कुछ भी ऐसा हो, लेकिन सोसाइटी ने Evidence. पहले ही अपना दिया होता है, एक जजमेंट दिया होता है, और उस लड़की का जो होता है वो कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है, एंड साइकोलॉजिकली मतलब अपना उसने ले लिया Traumatized. होता है कि शायद मैं ट्रॉमेटाइज, शायद मैं ही गलत हो रही हूँ उस चीज में। एक अगर वोकल भी हुई तब भी प्रॉब्लम है, ना हुए तब भी प्रॉब्लम है, उस चीज में क्या करे, क्या करना चाहिए? Look, first of all, we need to understand we are, especially what I've been saying since my life, throughout my life, we are a male dominating society. और वी आर सोसाइटल, हमारे में प्रेशर इतना ज्यादा करते हैं लड़की को, एज यू सेड कि नहीं अब तुम विक्टिम नहीं हो या बदनामी होगी, हपकार एंड लाइक दैट. आई थिंक don't lose your confidence level, be on what. कभी कभी तो ऐसा लगता है, because like this has happened to one of my close friends. So she's like, कहीं मैं ही तो नहीं गलत हूँ, मेरी माँ क्या गलत है, एग्जैक्टली, like I'm dressing एग्जैक्टली। up for this. मेरी माँ क्या गलत, मेरे को तो नहीं ज्यादा लग रहा है कि मैंने इस चीज को ज्यादा हाइप दिया, ये उसने क्यूट हाई है, you किया। know, I just pretended, or people are thinking about that I'm pretending or just making it up kind of thing. I'm like, no, this has happened with you. ये तुम्हारे साथ हुआ है. It's not like तुम इसको प्रिटेंड कर रही हो या तुम इसको किसी और रिलेट. इट्स लाइक बी व्हाट यू. अगर तुम अपनी जगह अंदर से एक फीलिंग भी लाओगी कि मेरी माँ को गलत, यू आर डन. At that point, you are done. It's like you have to stand by your word. You have to be on your words. It's like, I understand your confidence level कम होता है when there's a lot of deterioration and that societal pressure. वो हो जाता है, मेरी माँ को गलत, मैं क्या ऐसी बनूँ, भला इसमें मैं ही ठीक थी, I don't know happily. But I think at the end of the day हम चुप क्यों रहे, और हम ये सोचे भी क्यों कि मेरे माँ को गलत, मैं क्या ऐसी बोलूं. As long as आपके दिमाग में वो सोच, I understand we are humans at the end of the day and we have got that human nature, we feel so sometimes हम में वो सोच आती. बट मैं कहती हूँ अगर आप में वो सोच आती भी है एक पल के लिए, just kill that thought. Just counsel yourself, and if you can't counsel yourself, just take advice from your friends, and you know जो आपको boost करेंगे. जैसे for an example, some like in my family and friends, they know that I'm a kind of person who will boost them up. I'm not like अच्छा just it going marva, like you know such people in your circle. You just need to talk to them so that you're boosted, you're uplifted more and more, you know, rather than उस बंदे के साथ तुम बात करो, उससे वही अच्छा रेप नहीं हुआ तुम्हारा, as long as it's not rape, that's fine. फुफेरा भाई है, तेरा भाई है, केचुन पागल क्या कर रही हो गया, आपके खिलाफ नहीं बोल सकते. Why, man? Don't talk to those people who will just let you down, or who खुद भी बुज़दिल होते हैं और अगले बंदे को भी बुज़दिल बनाते हैं, you know. Obviously. I would say talk to those people or get counseling. Or we don't have counselors, number one. वहाँ पे तो होते ही नहीं है. But I think मैंने कुछ recently सुना है कि now there is such counselor sessions होने लगे हैं in Kashmir. But correct me if I'm wrong. But I think you need to counsel yourself, and I think in
जैसे गांव की अगर हम बात करें, चलो श्रीनगर में तो फिर भी मैंने देखा है कि पीपल थोड़ा सा वॉइस सपोर्ट स्कूल्स भी है यार, स्कूल्स भी है वैसे भी हमारे वहाँ श्रीनगर के, लेकिन बात हमारी बस श्रीनगर की नहीं है। अगर हम ओवरऑल कश्मीर की देखें तो देर all इज नो about नॉलेज that's what ऑफ, I'm saying, it's all देर about इज नो Kashmir. नॉलेज अबाउट दिस चाइल्ड अब्यूज एंड ऑल, देर इज नथिंग कुछ भी एल्स बिकॉज हमारा सिलेबस भी जो है जेके बोस का, वहां पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है इस चीज के लिए, तो हम तो लैग करते हैं। हमारे मॉरल वैल्यूज या मॉरल इथिक्स भी अगर हम देखते हैं तो शायद ये कभी चीज होती नहीं है। दैट मीन्स हम पहले से ही वो लैग करते आ रहे। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को बिल्कुल वो टाइम दिया ही नहीं है। exactly. कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा आ गया है हमारी जनरेशन में। तो बाप बेटे का देख ही नहीं सकता है, ना ही बेटा उतना बाप को Exactly. वैल्यू करता है कि अब वो आके उसको बता दे कुछ भी। तो वो कुछ चीजें पे गैप जनरेशन का या बातचीत का गैप, या फिर स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या And I आप think, सोचते हो? yeah, 100%, 100% I agree with that. And I think maintaining that healthy relationship with your child is the basic thing. हम्म अब जब हम बच्चे को शुरू से ही बोलेंगे ना सच कर छप, ये छु मास्टर boy, ये छु पास्टर boy, मैं क्या वन वचन में हम्म प्यानी वचनी पॉप वचनी हो, and you got things रिश्ते like that. रिश्ते रिश्ते थे माकले ये मकले, ऑब्वियसली। ऐसे क्या भूत दिमो, हम्म and हम्म bullshit. Sorry to use this word, but that's actually bullshit. What your parents have been teaching you, like if your parents are like हम्म that, then sorry to say हम्म that's a bullshit then. बट मुझे लगता है अगर आप एक बच्चे के साथ, अपने बच्चे के साथ वो हेल्दी रिलेशन, उसको आप मॉरल एजुकेशन, चलो स्कूल्स में वी नो कि गवर्नमेंट कैसा है, स्कूल्स कैसे हैं, हम्म ओपन अप नहीं हम्म होते, आई थिंक हम्म to maintain that healthy relationship, your parents, हम्म they need to counsel you, they need to have that healthy relationship with you, just to make your child comfortable. कोई rocket science नहीं है, it's just to make your child हम्म comfortable. Hey, how are you doing? Are you feeling safe with your cousins? Are you doing well? हम्म Like I हम्म can for an example, I just don't want to name that in the live session though, but just among the family as well, like you know दूर की family, उसको हम्म उसकी माँ ने बोला था, like वो बच्ची है, she was in हम्म 5th or 6th something like that, और उससे भी छोटी, तो उसने बोला है कि स्कूल पे जो 10th के बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि इन जो स्कूल पे उसको ड्रॉप करना, बस तक साथ जाना, बस स्टॉप तक, और वहां से घर तक इसको ड्रॉप करना. So she was a neighborhood girl which was living to that victim, I would say. I came to know now she's in mashallah 11th standard. एक बार तो Okay. रो दी because I kind to speak up with people and they just come out there, they speak out with their heart out. तो उसने मुझे बोला आपको पता मेरे साथ क्या हुआ है, वो लड़की ही थी, she was a girl and she was harassing Oh. other, yeah, and वो Oh भी किसी God. एरे गैरी स्कूल से नहीं, both are from Melanson, like the Oh renowned God. School. लाना कहाँ से था, जीरो ब्रिज पेट की कहता पेट कोता मत like bus stop तक and back. And she was like, I was so traumatized. And वो रो दी after 6th or 5th के बाद, she's now in 11th 12th, and वो रो दी मेरे son was like, oh my gosh, literally. मैंने बोला क्यों नहीं, why didn't you speak with your parents? I'm like, मैं इतना उसने मुझे इतना डरा के रखा था, अगर तुमने ये किया मुझे मैं इसे मार बकर इसे हूँ, मैं तुमको रास्ते में छोड़ूंगी, मैं तुमको वो ब्रिज है ना कोई जीरो ब्रिज के हिंदुस्तान ब्रिज, मैं हाँ है तुमको वहां धक्का से दूंगी. धक्का। Oh God. This is shit, man. Like seriously, मुझे अभी मिले ना, मैं तो गला घोट, shouldn't say that, but at least देखो वो बच्चा क्या देख के बड़ा हो गया जो अब्यूजर बन गया. I'm not sure about that. Maybe because you're a reflection of your parents. Exactly. तो आपकी अपब्रिंगिंग हम देखते हैं उस टाइम पे, तो हमें यही पता चल जाता है कि आपकी अपब्रिंगिंग शायद ऐसी हुई है या मतलब। लेकिन जब भी हम पेरेंट्स से बात करते हैं इस बारे में, मैंने काफी सारे सेशंस किए कश्मीर में, बैक टू बैक, विलेज टू विलेज, तो मैंने जब भी पेरेंट्स से बात की है, दे लाइक हमें ऐसी कोई नॉलेज ही नहीं है, ऐसा भी होता है, ऐसा हो नहीं सकता है, To be कानून honest, मॉम कहते कह रही है। sorry to interrupt you again. To be honest, if you're talking to parents, because you're going first hand and you're sharing that first hand experience with people, अगर आपको parents बोल रहे हैं तो knowledge नहीं है, sorry to say, sorry to use this word, that's bullshit. ऐसा नहीं है कि उनको knowledge नहीं होगी. They are 50-60 year old adults, उनको knowledge नहीं है. Like I'm an adult. I'm not around the age of 50 or 60 like my parents or whatever. जब मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता. That's something. And they are saying हमारे टाइम पे तो ये होता ही नहीं था, ये सारी टेक्नोलॉजी कसूर। एंड लिटरली मैंने कल भी महक के साथ ये बात की थी, मैंने बोला था कि मतलब ये उनका ये मानना है कि मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आई, फोनों के बच्चे खराब तने पे आई, क्या अब्यूज कुछ अब्यूज इसे कमरस में शंगान, लाइक
पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं। तो उस टाइम पे इंसान को उनके लेवल पे भी जाना पड़ता है और अपना लेवल भी देखना पड़ता है कि उनको हम समझाए कैसे की चीजें क्या होती है, और फिर उनका ये जवाब आता है कि पन उन माम कट करी है, पन उन पितर कट करी है, पन मोल कट करी है, यह सच अपूज, मतलब ऐसी चीजें जब आप फेस करते हो एंड फिर आप उनको ही समझाने बैठते, फिर आप उनको प्रूफ देने पड़ते हैं, फिर आप उनको जो विक्टिम्स होते हैं उनसे बात करानी पड़ती है, देन ओनली दे कैन गेट द कि हाँ That's ऐसा होता भी that's what है। I'm saying. Identifying sexual abuse is the basic thing. आप उसको identify जब आपको गलती समझ ही नहीं लगती है कि ये गलती है. For an example, I just broke this bottle. जब मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी कि मेरे हाथ से ये बॉटल टूट गई, आई एम लाइक बॉटल टूटी, मुझे नहीं पता टूटी कैसे, आई नीड टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि बॉटल खत्म, इट्स लाइक ब्रोकन इनटू पीसेस, आई नीड टू आइडेंटिफाई सिमिलर लाइक वाइज we need to identify what sexual abuse है भाई है, and you need to aware your parents, you need to aware them. अब मुझे लगता है अभी जो स्टेज है, like the initiatives what you have been taking through, उनको आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा, आई थिंक तभी जाके आपको यकीन करेंगे। एग्जैक्टली दिखाना पड़ता है। I understand technology has played a role, technology has played a part, but it has happened before technology as well. It's not like we can just, you know, थोप दे हम टेक्नोलॉजी पे, ऐसा नहीं है। It's like there before as well, but people weren't vocal about it. अगर कुछ होता था खानदान में तो वो खानदान के अंदर ही दबता था। अगर कुछ होता था किसी फैमिली में, they were like suppressing their child and doing stuff like that, and they're like just shut up, nothing has happened, just feel like normal stuff. पहले भी होता था पर बोलते नहीं थे। मतलब अगर आप किसी भी elderly बंदे के साथ बात करेंगे, like I can quote from my Nana ji, my grandfather. He is a retired IAS officer. He's alhamdulillah still there. He's elderly now, so he's gold medalist from Aligarh Muslim University, AMU. I'm trying to recall the name of the AMU. So when we talk to our grandparents, and like he's so both modern khayalat ke, although he's a grandfather, but when you talk to him, because he has lived his life and he has got that exposure, he has lived in every part of the world, and like you know he knows about that ki kya hai kya nahi. When you talk to him, when you get to know purana zamana jo hum bolte hain, god mostly Dasan, when you talk to them, I'm like, Abba ji, like, has this happened before? Was it earlier as well? It was like, you're sorry, Dasan, but it was under the curtains and under the shields and under the carpet, exactly. Under the carpet, like it was earlier before as well. पर हम बोलते नहीं थे गसानोस क्या उस गसा, it's like के चुनो you go and stuff like that. और ऐसा भी मैंने सुना, like अगर कोई रेप होता था, I'll call it as rape, and then अगर वो लड़की pregnant होती थी from your मसेरा बाई, पुफेरा बाई, पितेरा बाई, that's what we live in that society. फिर उसको बोलते तुमसे लत कड़ा पता तू बच मारा, that's horrendous, like seriously, that's bizarre. मैंने बोला हाँ, like ऐसा हुआ था, होता है, it's like हाँ होता है, मगर इसमें उस लड़की की आवाज ऐसे दबा देते बच्चे को उधर ही कुचल, डॉक्टर के पास भी नहीं लेना, like look at that, how worse it would be. डॉक्टर के पास भी नहीं। अब हम बोलेंगे कि तब ज़माने में I'm talking about a first-hand experience, when you know directly talk to your elderly people like grandfather. It's like ऐसे होता था, मैंने बहुत बार सुना है ऐसे हुआ है, मगर सब बचते मारान तपरी क्या करा and they know who the victim is, but then is it normal salas and kihingo. Oh God, that's it. मतलब ये तब की चीजें हैं, मुझे लगता है शायद अभी का टाइम फिर सही है, बिकॉज हर एक के पास थोड़ी सी नॉलेज तो है। ये बेहतर हो रहा है, एटलीस्ट नहीं मार रहे हो, चार दीवारी में नहीं मार रहे हो, एटलीस्ट you have got helplines. I'm not sure whether it's in Kashmir or not, but you have got you need to call the police and you need to call the cops and they can help you. I'm sure I know what cops do, but still, you know, at least मैं यहाँ की बात करूँ, like cops are very very friendly and counsel करते हैं बच्चे को। यहाँ पे लोगों के घर आते हैं police and they're like counseling, are you doing fine, are you happy with your parents, कहीं वो आपको मार तो नहीं है। मंशी ये तो ज़्यादा modern माहौल, I just don't want to go beyond that, but police is very helpful. हमारे यहाँ आप देखो, आप केस रिपोर्ट करो, सुशुनासा they just take you off the books. I don't know why. किसका प्रेशर आता है, पॉलिटिकल प्रेशर आता है, कहाँ से पॉलिटिकल, मैक्सिमम पॉलिटिकल होता है, मैक्सिमम पैसे का होता है। Exactly, या तो वो
फुफेरा भाई, मसेरा भाई या व्हाटएवर भाई वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, पैसे वाले होते हैं और दे चांट अबाउट रिलीजन, तो वो पैसे के नाम और मजहब के नाम पे उसको दबा देते हैं, पुलिस को भी पैसे खिलाते हैं. That's what it's happened. Like that's not. But seriously, I think parents. Again, I'll go with the parents. You need to understand and you need to identify that. भाई ये होता है. It happens. इस बारे में जितना भी इंसान बात करता है, एंड आई फील एवरी टाइम मेरा वो मतलब एक अलग ही मूड चला जाता है. इस बारे में इंसान जितना बात करे उतना कम है, It's a लेकिन very sensitive फिर आप topic. सेंसिटिव एग्जैक्टली. और ये हर जगह होता है, नॉट ओनली इन कश्मीर, इंडिया के बाहर जितने भी सारे ये कंट्रीज है, हर जगह होता है. अफगानिस्तान में होता है, हर एक जगह पे होता है. लेकिन हर जगह पे वैसी सुविधाएं हैं, जैसे हम बोलेंगे हर जगह पे वैसी चीजें होती है. लेकिन कश्मीर में क्या है, कश्मीर में आप हम अपने ही लोग दबा देते हैं और फिर हम ही उस बच्चे को जीने नहीं देते जिसके साथ ये होता है. और उसकी जब शादी भी होती है, जब शादी का टाइम है, तब भी उस बात को छालते हैं. तो सब बचपन में इसके गोमुत तो बचपन में खुद के गोमुत. तो वो सोसाइटी की वजह से हद की बात, और हद, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, हद की बात ये है कि मतलब इतना सोसाइटी का प्रेशर है, उसी लड़की को उल्टा बदनाम करते हैं. एक एग्जैक्टली वही मैं बोल रही हूँ. उसको उल्टा बदनाम ना, यह इतना खराब. अच्छा, स्पेशली अगर आप जीन्स पहनते हो कश्मीर में, अगर आप टी शर्ट्स पहनते हैं, लाइक यू हैव दैट टैग नेम, योर गर्ल, लाइक खराब लूज है, यू कैरेक्टर ही नहीं है. वही नहीं है. एमएस को असल एमसी ना, एमएस चुप, एमी ऐसे कोरमत इसी ने उसको you know, it's normal about girls as well, जो अभी 9th में 10th में, who are below 18, and 1 in 10 child, like that's as per the records, will be sexually abused before the age of 18. यानी 10 में से एक बच्चा 18 साल की उम्र से पहले सेक्सुअली अब्यूज होगा ही होगा. ऑब्वियसली. और ऐसी चीजें होती है, चाहे वो टीचर हो आपका, चाहे, लेकिन वो क्लोज रिलेशन ही होते हैं, चाहे वो टीचर के साथ हो, चाहे वो फिर अपने घर में जो भी आपका एनवायरनमेंट हो उसके साथ हो. बाहर वाला तो कोई आके करेगा नहीं. सीरियसली, आई थिंक टीचर्स एज वेल, दे आर नॉट ट्रेन्ड. मैंने तो टीचर ही, आई डोंट नो व्हेन टू शेयर दिस ऑन द लाइव, मैंने तो टीचर भी ठरकी देखे, लाइक दे हैव गॉट रिलेशनशिप्स और दे अब्यूज, दे सेक्सुअली अब्यूज. मुझे लगता है कि हर एक ने, आई कैन बेट ऑन दैट, आई कैन 100% बेट ऑन दैट, कश्मीर में हर एक लड़की ने टीचर से हैरेसमेंट लिया. एग्जैक्टली से पढ़े हो, चाहे आप जबरी जज से पढ़े हो, चाहे आपने कहीं भी पढ़ा, आप हुए ही किसी ना किसी, whether it's a soft touch, it's a hard touch, whether one or some other kind of anything you have gone through in your school. Teachers और किसी ने अपने टाइम पे बात नहीं की होगी, nobody, because टीचर है, टीचर को कोई सुनेगा नहीं. और इवन लिटरली मुझे आज भी लेकिन ऐसा हुआ भी है लिटरली. मुझे कॉल भी आया था कुछ टाइम पहले, कश्मीर के स्कूल की बात है, तो टीचर ऐसा कर चुका है और करता भी है, हर एक लड़की के साथ करता जा रहा है. एंड हर एक लड़की चुप है. क्यों? क्योंकि हमारे मैथ्स टीचर है, हमारे मैथ्स के मार्क्स कम होंगे, नंबर कमाएंगे. और घर पे मम्मा पापा नहीं सुनेंगे, वो बोलेंगे टीचर ऐसा कहाँ करेगा, आपकी ही गलती है. लेकिन वही होता है ना, जब पेरेंट्स आपके ऐसे है कि आप वो सुनेंगे नहीं आपका, तो आप बच्चा भी सफर करेगा. फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या मिलेगा आपको? जो बांडीपुरा में हो गया उस बच्ची के साथ, शी वॉज प्रेग्नेंट और उसकी माँ को पता भी नहीं था. 8 साल की बच्ची थी एंड शी वॉज प्रेग्नेंट एंड उसको पता भी नहीं था, और वो रिपोर्टेड केस है. तो यही चीजें होती है जब आपने अपने पेरेंट्स के साथ टाइम पे, या पेरेंट्स ने आपके साथ टाइम पे बात नहीं की होगी, तो ये चीजें फिर होंगी. और जब ये चीजें आती है तो फिर ये पूरे कौम को तबाह कर देती है. It's shocking जब आप ये चीजें सुनते हो. और मुझे लगता है that's what I'm saying, that working with children check हर एक को होना चाहिए, in the sense that if you are a teacher, आप kindergarten में हो, वो चेक होना चाहिए, so that you have a proper, पूरा उसका criminal check होता है, police check होता है, while you apply for that check, because I have done that myself, I'm working, so while you apply that application form, तो आपको वो police clearance लानी होती है, आपको 2-3 forms भरने होते हैं, you have to go through a process, तब जाके आपका record check होता है, पिछले जितने साल आप जितने साल के हो, your previous record is checked, whether you have bullied someone, you have harassed someone, like आपका कैसा, तब जाके आपको वो स्क्रीनिंग चेक मिलता है, which is working with children check. मुझे लगता है ये स्कूल्स में इम्प्लीमेंट, आई थिंक लॉज शुड बी एनफोर्स्ड. हम बातें करें, कितनी भी डिबेट करें, हम कितना भी वो चीज करें, अगर हमारे पेरेंट्स, जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स ने रियलाइज ही करा, पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई करा, देयर लाइक टेक्नोलॉजी ने भी टेक्नोलॉजी ने सुधारा है,
Number two, I think गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वर्किंग विद चिल्ड्रन चेक जो है वो हर एक को देना चाहिए, लाइक दे शुड गिव दोज, अगर उनका रिकॉर्ड खराब रह गया होगा, लाइक देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसेस, लॉज एनफोर्स करने चाहिए, प्रॉपर लॉज टू बी एनफोर्स टू इम्प्लीमेंट अराउंड I think yeah, NGOs, we should set up some NGOs, take up some initiatives, like we need to do it. अगर गवर्नमेंट 10 में से एक स्टेप चल रही है, we as youth and we as society need to do things like that. कश्मीर में मैक्सिमम हम बुलिंग भी फेस करते हैं, मतलब बॉडी शेमिंग, कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मतलब हम एक दूसरे को ही जीने नहीं देते, लाइक हो काला गोरा, ये तो पहले पहले होता था, लेकिन अभी भी हम कश्मीर में सेम चीजें फेस करते हैं। उस चीज पे भी काले है ही नहीं, नंबर वन। अगर आप थोड़ा सा रंग किसी का ऐसा बहन सावला भी है तो like if you are 2-3 siblings and one is looking good looking, what should I say, everybody is looking good, अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया, हर एक को अपनी अपनी क्वालिटीज दी है, I believe हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज। अब फॉर एन एग्जांपल, अब कोई अच्छा दिख रहा है, किसी को लग रहा है कि मतलब मैं अच्छी दिख रही हूँ, आई एम गुड लुकिंग। अब मेरा बहन या भाई होगा जो थोड़ा सा मेरे रंग से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा सांवला होगा, को इतना डिप्रेस करते हो तुम लोग, उसको ये सुना, बॉडी शेमिंग, पतला, मोटा पतला। एंड आई नो लाइक मैंने तो नहीं एक्सपीरियंस किया है, टच वुड, बट लाइक आई हैव हर्ड अबाउट दैट, जो मोटे होते हैं उनको लिटरली मैं ये सजा, यार अब वो नहीं अच्छा हो गया, अब ये नहीं। और रिश्ते भी, जैसे लड़कियों के आगे रिश्ते भी आते हैं ना, तो ऐसे भी मैंने सुना है कि बॉडी शेमिंग पे रिश्ते नकारते हैं। भाई तुम अपने आप को देखो, तुम क्या हो, लाइक सीरियसली आई वाज शॉक्ड व्हेन आई गॉट टू नो दैट रिश्ते उन्होंने मना कर दिया लड़के वालों ने, क्या इस ना कि कोरस वेट। और एक रिश्ता, आई जस्ट ऑन नॉट ऑन द टॉप ऑफ माय माइंड दो, बट अभी याद आया, उसका रिश्ता होके कट गया, क्योंकि वो ड्यूरिंग क्योंकि जब उनकी एंगेजमेंट हो गई थी तब शी वाज good looking, I don't know what that good looking means, but during that engagement से शादी तक का सफर एक दोन वेरी आसास या गंडित, तो वो फिर मोटी हो गई थी, and she was like, nah, she's not looking good, she's fat, I just need to end this up. I'm like, oh god, और रिश्ता खत्म। I'm like, seriously इस पे? फिर वो लड़की is like, अब मैं जिम जाऊंगी। मैंने बोला, भाई तू जिम मत जा, तू इसको दिमाग में मत ले, just don't think about that, इसको मेंटल प्रॉब्लम है। मतलब हर एक चीज पे हम मतलब क्रिटिसिज्म करते हैं उसको इसको, लाइक हमें अपने आप पे नजर नहीं है, हमें एक ही अल्लाह ताला ने सबको बनाया है, किसी को काला, किसी को व्हाटएवर इट इज, जो भी है, लेकिन उस पे आप किसी के साथ रिश्ता खत्म करना है, उसको चढ़ाना। I'll quote an example of this country, और देखो हम बोलते हैं ना कि अंग्रेज चूत, like I'm just saying up openly about it, मुझे लगता है ये लोग इतने ऑनेस्ट है ना, मुसलमान, we are so dishonest people, to be honest, it's not like कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बोल रही हूँ, it's like as a कश्मीरी, हम खुद यहाँ पे आपको किसी चीज का हिसाब किताब नहीं, आप बस में जाओ आपको कोई किराया नहीं मांगने आता है, आप सुपरमार्केट में जाओ आपको कोई बिल्स नहीं मांगता है, सीधे पहुंच, अगर मैंने ये बॉटल खरीदी, if you want to go, you don't want to pay for it, nobody will check you know। पर लोग इतने ऑनेस्ट हैं, लोग इतने, आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक्स नहीं है, आप 9 to 5 आपका ऑफिस है, इफ यू आर 9-5, यहाँ पे लोग 1 मिनट पहले आएंगे, 5 मिनट पहले आएंगे, लेट से नहीं कोई नहीं वहाँ, लाइक पीपल आर सो ऑनेस्ट अबाउट इट। एंड लुक एट अस, हम क्या है, हम करप्शन से भरे हुए हैं, ऑनेस्टी तो दूर। if we properly talk about Australia is a 0% corrupted country, like corruption, no, not at all, nothing, जुगाड़ वो ये ना, and people are so, हम देखो अच्छी टैगलाइन अच्छी मुसलमानी हम क्या अच्छी मसा अच्छी शराब चमाई मसा अच्छी काफिरी मसा अच्छी हो, पर यार ये इतने ऑनेस्ट है, तुम इनसे सीखो कुछ नहीं, ऑब्वियसली नहीं को बदनाम करते हैं। I can quote an example, आज के दिन की आज ही हो गया, हमारी कंपनी में there is one Muslim guy, he's from Iran, his name is Mohammed, and उसका कुछ सैलरी का लास्ट फोर्टनाइट में थोड़ा सा पंगा हो गया सैलरी में, ऐसे, तो he was calling me and he was like, look, it's Christmas time, क्योंकि Christmas time होता है तो everyone, be it a Muslim or anyone else, तो उनको they have to go out and party and stuff like that, तो he was like, मेरा जो सैलरी है उसका, वो एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो गया था, दैट्स नॉट कि उसकी सैलरी खाई थी, वो कुछ there was some mistake in the contract, तो अब वो कम होके आई थी, एंड ही वाज टू मी कि मेरा
$140 कम हो रहा है. I was like, okay, I'll sort this out with the accountant. Leave that with me. जो उसका मैनेजर है, क्योंकि ये डायरेक्ट पहले अगर like if it's something around salary and stuff, it comes through HR. But उसका मैनेजर मुझे फोन करके बोल रहा है, क्योंकि वो इतना डिप्रेस है. He was like, I don't want to work, and I'm like pissed off. गर्चे इस कशीर में गर्दिमा दाम की बतरावो बकरो हु बकरो, and he was pissed off, but he was so calm as well. तो उसका मैनेजर मुझे फोन करके बोलते हैं, Naveed, I'm going to pay it from my pocket. Like I'll pay $140 from my personal bank account, but I'll pay this guy. It's not because he's Muslim. His name is like Muhammad. He's Muslim. पर आप देखो लोग हर एक को treat equally कर. He's like, I'll pay $140 from my own personal bank account. I'm like, wow, ये तो मैंने सोचा ही नहीं. I'm like, okay, I'll और यहाँ हम अपने लोगों का पत्ता काटने में लगे हुए होते हैं. हमें तो दूसरे का तो हम सोच भी नहीं सकते, बिकॉज हम अपने ही लोगों में अच्छा ईशा मुसलमान, अगर हम क्रिश्चियन होंगे और कोई मुस्लिम होगा उसके साथ ऐसा, अच्छा ईशा मुसलमान हो असल गोस या ऐसा होती है. हम ऐसे लोग हैं, हम दूसरे को हमेशा जज करते हैं, गिराना और जज करना. ईशा ह्यून अच्छा सुनुस तेले भला. I don't know, like seriously, why? But these guys are so, and you learn from these things. You got to be honest. आप सिर्फ अपनों को ही, अगर कोई किसी ने तरक्की की ना, बस पता लगी तान तेमिस बिचारीस काबरी वाला तो ता क्या ना. हाँ एग्जैक्टली. अगर कोई कुछ करता भी है सोसाइटी में, जैसे मैं जैसे इस इनिशिएटिव पे काम करती हूँ, ओ गॉड, आई हैव बीन, मतलब इतना कुछ सुना है, बोला सोसाइटी, इवन अपने रिलेटिव्स भी कभी कभी, एंड लिटरली क्यों हाँ वंचिन से कहन कर. इट्स लाइक मतलब वने से ये खुद मत माटे कोई मोहनी छक गरी ब्याह पगची खानदर रिश्ते दी. I just hate this word kori mohni. I'm like, shit man, I literally just boils my blood. Kori mohni. Like what? Seriously, it's रिश्ते दी ने कहीं ना. व्हाई वी आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो अब सब देखते हैं आजकल को इन लड़कियों को कोई रिश्ता नहीं देता है. व्हाई? बिकॉज हमारी आवाज ऐसी है कि हम एक पर्टिकुलर कॉज पे खड़े हो सकते हैं, हमें उतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन लोग आपको पीछे से गिराने की कोशिश हमेशा करते हैं. एंड उसके बाद भी अगर आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो देन उनकी ही हार होती है. लेकिन मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म, उनका काम सारा बंद, एंड घर पे बैठ के चुप हो जाते हैं. लेकिन अगर कम टू द पॉइंट आप अपनी ही बात करेंगे, तो चाइल्ड अब्यूज एक नोबल कॉज है. या अगर स्कूल्स की बात करें, पहले पेरेंटिंग ही अगर सही होती तो स्कूल की हमें बात करनी नहीं पड़ती. लेकिन मैंने स्कूल्स में भी जाके देखा हुआ है. स्कूल्स में जब भी मैं गई हूँ, तो वहां पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स गांव साइड से जब मैंने देखा हुआ था, तो वहां पे एक बच्ची को मैंने बोला था, डू यू नो व्हाट इज गुड टच एंड बैड टच, आपको पता है? शी सेड नो आई डोंट नो. मैंने बोला अभी आप 12th में हो, इतने टाइम तक आपको टच समझ में नहीं आया, एंड आपके साथ तो अल्लाह बचाए, फिर पता नहीं मैं क्या ही बताऊं आपको. तो एंड फिर जब मैंने उनको समझाया टच कैसे क्या होता है, एंड दे वर लाइक, हम तो सारे इस चीज से गुजर चुके हैं, लेकिन हमने कभी इस चीज पे बात नहीं की है, एंड हमारे पेरेंट्स ने भी कभी बोला. really तो मतलब इस चीज को फिर मतलब बोलना, बात करना, और फिर पेरेंट्स को उनको मतलब उन जब आप रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज की बात करते हैं, तो डिफरेंट चीजें आपको दिखाई देती है. तो वहां पे फिर आपको मतलब ये भी दिखाई देता है कि गांव वाले जो होते हैं, जो मतलब बिल्कुल फॉर फ्लंग एरियाज, इनका कोई कनेक्शन नहीं, नो इंटरनेट, नो फोन, अभी भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी लाइट का कोई सिस्टम नहीं है. तो वहां पे जब आप बात करते हैं, तो लिटरली वहां पे ऐसा कुछ कोई कंसेप्ट ही नहीं है. तो उन जगहों पे जाना, फिर अवेयर करना, फिर लोगों को बताना, मतलब एक होता है कि आप ये चीजें आपके साथ अगर ऐसा हुआ होगा, या आप दूसरे को बचाना चाहते हो, लेकिन इस सब चीज में ये एक मेरी जिम्मेदारी नहीं है. यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. आप कश्मीर से आपके रूट है, तो ये हर एक की जिम्मेदारी है. तो क्या आपको लगता है, क्या यूथ को क्या करना चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर? 100%, I totally agree with you. Look, if you talk about जैसे आपने initiative लिया on your own humanitarian grounds and on your own level, जैसे आपने initiative लिया, तो that's what this page is also about. I just talked to people because last time when I heard about the suicide cases in Kashmir, I was like, what's this going on? Why are people getting suicidal? Despite knowing the fact they are Muslims, and we have got that religious concept about it. Chalo, yahan pe to suicide, I understand, but being a Muslim, you can't do that, man. Come on, man. You need to understand that. But anyways, तो तभी जाके I just उसी से थोड़ा सा इंस्पायर होके, that's one of my friend actually
he told me, he advised me to apna page bana le, just talk to people and chat with them, because if you are getting suicidal thoughts, it means you need to speak up to someone. Just take that out of your thing. आपको बात करनी है, you need to speak up. So that's where you get those suicidal thoughts, because you're feeling lonely, you're feeling alone, you're feeling not connected to people, you're feeling like you have a lots of feelings in your mind, kind of thing. But tabhi jaake maine ye page be being my roots from Kashmir, which I'm proud of, and that's why I was like, okay, let me talk to people. If you want to say something, and then I got to know a couple of stories as well. They like DM'd me and like, oh, we can't come in your live, we can't speak up that much. It's like mere saath aise hua hai. I have got my working parents, wo sare ghar se bahar, and I'm like feeling all depressed and lonely. At least I have got you to talk to. चलो फिर भी मैं किसी से बात करती हूँ, and stuff like that. And अभी entrance भी था, तो some people were so depressed, and they were like, at least when you come live and we kind of talk, हमें थोड़ा सा वो change हो जाता है, because mostly मैं जब live आती हूँ तो it's early in the morning because of the time difference. So जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं या जो early risers होते हैं, I just speak up with them. So they're like, oh, thank you for coming live, and it was so good to talk to you. At least we are feeling थोड़ा सा वो different, वो उस पढ़ाई और उस घर वाले बोलेंगे सीट चिकाड़ी नत खत्म नत गो and stuff. नत सोरी मखलू not maklo, sorry, वही दुनिया है. तो इस वजह से, so that, and I really liked when I got to know people and got to listen to them, and some were like inspired about आप कैसे घर से बाहर हो, how can we being a girl, or even boys, like आप कैसे, आपने कहाँ पढ़ा है, आप कैसे घर से बाहर हो, what are the the career progressions. Although I'm not an immigration agent, but still I try to let them know and just uplift them as much as I could, being not a citizen, though I'm sorry, I'm not a citizen of India now. So, but my roots are from there. But I try to uplift them और उनके साथ बात करके वही कत बात. And even it's not about them only, to be honest. When I'm feeling overwhelmed, and when I struggle with work, because every time when you're working, you have got bad days as well. आपका दिन हमेशा सही नहीं जाता office में. It's like, oh man, you need, especially when you are in HR, you got to deal with a lot of stuff, So even when I just shut my work sometimes up, I'm like, I don't want to check my emails, I don't want to answer my calls, it's just fine. So I just go live on the page and then talk to people. तो मुझे भी अच्छा लगता है, connect with people. मैं कश्मीर में बात करती हूँ, मैं उर्दू में बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ. So I just change that, I just switch that mode from work thing to to my own people and connect with them. So I think मेरे लिए भी, क्योंकि sometimes I feel lonely as well. Sometimes I feel like exactly. हर एक इंसान कभी-कभी हो जाता है, ऐसा कोई भी नहीं है. It's not like आपको ऐसे thoughts नहीं आते. No doubt, you talk to people, you talk to family, you talk to friends, but still at times you get like, oh my gosh, वो खराब दिन निकला, and you need to talk to someone. मैं बात करती, तो that's why this page is more about कि I come live. अगर कोई, usually people don't prefer coming live, face to face, they feel shy. I'm like, okay, talk to me, you can just text me, I'll reply to your questions. And this also happens, and some people DM me a lot about a lot of people have got हमारे पास ऐसी, at least you are doing something, or contributing something, मतलब कुछ करने से ना करने से bits and pieces, not much, but bits and pieces. नहीं है, still they are talking rubbish on the Instagram and आपके लाइव पे या मेरे लाइव पे या किसी भी पोस्ट पे जो कुछ करते भी नहीं, उनको सोसाइटी का ABCD भी नहीं पता, जिनको ये भी नहीं पता कि चाइल्ड अब्यूज होता क्या है. एंड उनके लिए मतलब, और हमारे लिए हमारी दुनिया ही बिल्कुल डिफरेंट है. बिकॉज एटलीस्ट हम सोसाइटी की और कुछ तो कर रहे हैं. हम किसी का अगर मूड भी ठीक होता है, किसी को अगर हमारी 1% भी बात समझ आती है, तो देन वी आर डन. हमारा पॉइंट वहीं पे खत्म होता है और हमारा काम भी वहीं पे खत्म होता है. लेकिन जब ऐसे मतलब बुरी चीजें या बैड जजमेंट्स आपको फेस करने पड़ते हैं, एक बच्चे को फेस करने पड़ते हैं, उस टाइम पे व्हाट डू यू थिंक क्या करना चाहिए? To be honest, it's for you as a person, because I know you live in that society. I'm talking to you directly, because I know you are running an initiative, you are running a page, you're on a public platform. You might be having you might get a lot of hatred, a lot of comments, exactly. a lot of things from your friends, relatives, and बाकियों से भी. आपके लिए भी एक एडवाइस, और हर एक के लिए जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, not about this initiative, who are on public pages, who are running those pages, or doing some things, even about me, because I'm a part of that as well, although I'm running a small page, but still
आप उसको दिमाग पे सवार ही मत करने दो। आई नो पीपल टॉक, वो आपको गालियां भी देते होंगे, वो आपको बहुत कुछ बोलते Exactly. होंगे, दैट्स फाइन, I have been through this. लेट देम। वो कश्मीर, आई नो दैट, मुझे कश्मीर थोड़ी अच्छी आती है, बट कुछ फ्रेजेस, लेक्चर थॉक लर्न गेट्स, वही होता है ना। Sorry, I don't know whether I said right or not. Lecture talk let it get, yeah, वही है Exactly, वही you said right. Oh gosh, thank God. So it's something like, okay, वो गाली दे रहे हैं, that's fine, just leave that. You know, वो अपनी उनकी अपब्रिंगिंग्स उनके उससे समझ आती है कि वो किस माहौल में पले बड़े। आप करो जो आपको करना है, because even I get stuff like that, oh तुम अंग्रेज हो, तुम वो हो, तुम ये हो, you're not, that's fine, yeah I am, that's okay, think whatever you want to, that's okay। पर उनको आप जितना समझाओगे ना उतना वो उल्टेंगे, तो बेटर है कि Exactly. इग्नोर। आई अंडरस्टैंड यू माइट बी, और ऐसे बच्चों के लिए भी अब I'll say like we are talking about main जो हमारा टॉपिक है, let's not deviate from that, it's about the child abuse। I think children need to communicate, they need to voice and they need to, और schools में भी अगर उनको, जैसे यहाँ पे होता है schools में उनको बोलते हैं, teachers ask them are you feeling fine, आपके घर पे कैसा माहौल है, अगर उसका एक्टिविटी, because one of my friends, she's from Pakistan and she's a teacher, so वो बोलती रहती है कि हम बच्चों को कितना नोटिस करते हैं डेली बेसिस पे, वी गॉट अ नोट, अगर कोई बच्चा आज उसने ज्यादा बातें नहीं की या उसके बिहेवियर में चेंज आ गया, देन दे नोटिस, दे मार्क इन देयर डायरी। एक बच्चे के लिए एक डायरी टीचर मेंटेन करता है कि उसके बिहेवियर में अगर कुछ चेंज आ गया, देन दे पहले तो वो देखते हैं कि मे बी ही माइट नॉट बी फीलिंग वेल, या थोड़ा सा होता है ना कभी समटाइम्स चिल्ड्रन आर लो एंड स्टफ, पर उसके बाद अगर वो चेंज उनको बार बार इफ दे आर फीलिंग दैट चेंज लाइक इट्स कांस्टेंट एंड इट्स इम्प्रूविंग, लाइक इट्स इंक्रीजिंग मोर, तो फिर उनके पेरेंट्स को बुला के पहले उस बच्चे के साथ बात करते हैं, पहले फिर पेरेंट्स को बताते हैं कि क्या इज एवरीथिंग फाइन, आपका बच्चे में थोड़े से ऐसे बिहेवियर है, फिर बच्चे से पूछते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या आपके घर पे सब ठीक है, so then they get to know, you know, my parents got separated, they are on I don't know what divorce is, what does that mean, they are क्योंकि यहाँ पे ये normal, it's in Australia 60, just don't quote me on the numbers, I'm not sure, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, I think 60% or something like that, emotional abuse होता है बच्चों में, because they feel like oh our parents are now separated, अब हम क्या करेंगे, where we can go, क्योंकि वो अलग ये अलग, you know, he said she said, और वही उस चीज में वो लगे होते हैं, तो वो बिहेवियर एक टीचर को समझना है, they have to identify something is going on with that child, they need to understand that, they need to realize, they need to speak up with their parents, it's like अच्छा मैं कुरान, पहले वहां पे तो बच्चे पेरेंट्स से वो क्या कर रहे होते हैं, निटिंग कैच तो था ना, क्या बोलते हैं उसको यार, बनियान वाला, हाँ एग्जैक्टली वही कर रहे होते हैं, उनको तो भाई फुर्सत, वो बच्चे को क्या देखेंगे, वो तो अपनों में लगे, और एंड इफ यू टॉक अबाउट हाई स्कूल, चलो ये तो गवर्नमेंट स्कूल्स में बिनान का रांच है, एंड इफ यू टॉक अबाउट जैसे बड़े बड़े स्कूल्स हो गए, वहां पे तो मैडम अपने ही फैशन को ही, अपने ही फैशनिस्टा बनी होती है, अपने आप को ही देख रही होती है कि बस ऐसा ठीक लगा, मेरा मेकअप ठीक है, मेरा वो ठीक है, यार कॉन्सेंट्रेट, और जिस काम के लिए बहन आई हो वो तो करो, तुम बाद में खुद को शीशे में जाके देखना, बट that's how we ignore child, the better thing is like we don't need to ignore children, we need to और मॉनिटर करो उनको कि उनके बिहेवियर में क्यों चेंज आ रहा है, why, just speak up with them, और फिर उनको काउंसिल करो, उनके साथ बात करो, फिर उनके पेरेंट्स के साथ आप बात करो, लाइक जो बेसिक चीजें हैं, और घर पे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक कम्युनिकेट, एक हाई लेवल पे हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करे, just bridge that gap, that communication barrier, they need to have that, they need to bridge that gap actually and talk to their children and you know speak up with them, is everything doing fine, तुम आज शादी में गई थी, तचुकर जनाना सा गबत बाकिन सिट गॉसिप करना सजन इंजन बचन ध्यान कोई, वहाँ मरने पे नहीं छोड़ते, शादियों की तो बात नहीं है, सॉरी व्हाट वाज दैट, मैंने बोला जब किसी की डेथ भी होती है तब भी गॉसिपिंग में लगी, ताजियत वी कॉल्ड इट ना, ताजियत ही बोलते हैं ना, भी गॉसिप में चला जाता है, तो एग्जैक्टली क्योंकि वहां पे वो गॉसिप में लगे होते हैं, वहां से व्हाई आई एम हाईलाइटिंग शादी, बिकॉज मैंने बहुत सारे केसेस देखे, मैक्सिमम अब्यूज वहीं होता है, और हमें क्या लगता है ये मास्तुरबो, ये पफ्तुरबो, ये पितुरबो, ये कुछ नहीं करेगा, और वही आप मत किसी और को देखो, कोई और नेबर आपके घर पे अब्यूज करने नहीं आएगा, आपके कभी उसने किया भी नहीं होगा, एग्जैक्टली
वो आपके कोई अपने ही है जो ये करेगा। नहीं, वो डरेगा भी आपके घर आने से। ये तो कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस है, चाइल्ड अब्यूज 100%। कॉन्टिन्यूसली होता है और आपके अपने से ही होता है। और वहां पे मदर्स को स्पेशली, अगर आप इफ यू आर अ मदर देन यू नीड टू बी केयरफुल। मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, वेयर दे आर दे गुड, वो कहाँ पे है, कजिन्स के साथ, अच्छा इमछा कजिन बेत मास्टर पितर तचासा कांड ते गोमुत मास्टर पितर, हाँ just go and have a look. You can't ignore, you can't be blind. They just blindfold and they're like, okay, अच्छा इमची, you gotta be with them, just be friendly. आप बैठो, बात करो, नहीं बस इग्नोर के मन छासा जनानन पांदर बार करन गॉसिप एंड स्टफ एंड बेटी का कुछ बच्चों को बेच देते हैं। एग्जैक्टली दैट्स द और वियर्ड फिर जब मिलता है एंड देवर लाइक अब चुप करो, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें लड़ाई नहीं करनी, खानदानों को अलग नहीं करना, इट्स बेटर टू कीप योर माउथ शट एंड बस चलता रहता है अपना। एग्जैक्टली अगर कोई लड़कियां बोलती भी है बाय हुक और बाय क्रूक एट द एंड ऑफ द डे, लाइक इफ शी स्पीक्स अप अबाउट व्हाट हैज हैपेंड विद मी डाउन द लाइन और उस टाइम पे, शुक्री खराब इतना एनी एग्जैक्टली बस ये चीजें चलती रहती है। But I think let them say that. Don't give a shit about it. Sorry to use that word, but seriously, don't give a shit about that. बोलने दो, क्योंकि जो खराब बंदा होता है, जिसका कैरेक्टर लूज होता है, या जो अब्यूजर होता है, I'll talk about abuser here. He'll try to hide and protect himself because he has got that brand name and the image in society and the family, and he doesn't want to spoil that image, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने कुछ बोला ये उल्टा मेरे पे आएगा and my image will be ruined. That's why he just puts back on that girl. यह हिच खराब एमी कोर ये tel क्या is this message काट कर, that's fine, you were my cousin, that's why I was talking to you, that doesn't mean that I'm involved in you and you can sexually do anything करने के लिए कश्मीर में ये है ना, अच्छा tel क्या तुलन यून फोन यासी ने पे फसम, what the hell man, फसम, what does that mean, you were my cousin and that's why I was talking to you. That doesn't mean that you can do any bullshit about me and you can just sexually abuse me because you are my cousin. I'm talking to you because of that relation. पर वही है कि फिर वो वैसे ही पोर्ट्रे करते हैं उस चीज को और लड़की को भी कल्प्रिट बनाते हैं। मीनवाइल हमारा जो मेन है सोसाइटी, या सोसाइटी किनसे बनती है, हमसे ही तो बनती है और हमें अपने ही दिमाग को पहले ठीक करना है। Exactly. I think with these debates and जितना भी हम बात करें, I think we need to actually take initiatives like you are doing out. We need to take initiatives जैसे कोई लॉ पास करो, जैसे आप यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज या स्कूल्स में है, लॉ कुछ पॉलिसीज बनाओ, लाइक इफ I'm not sure whether this is happening or not, like in companies जैसे यहाँ पे होता है, you have to strategize around the policies. कोई पॉलिसी बनाओ उसके, अगर आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो, अगर आपका किंडरगार्टन है, अगर आप फैमिली डे केयर या चाइल्ड केयर रन कर रहे हो, sorry, what you need to do is you just need to have that policy formulated and framed around can you work with children, what are the laws, अगर आपने कुछ गलत किया how it can turn against you. मुझे लगता है हम गधों को भी नौकरियां देते हैं, हम हरेक को चलो जी आ जाओ, करप्शन है तो ऑब्वियसली वहां हम क्वालिफिकेशन देखते ना उसका मॉरल एथिक्स वाला, या ना उसका कैरेक्टर देखते कि क्या क्या करा क्या है इसने अभी तक सोसाइटी में या इससे पहले भी जो भी चीजें हुई होंगी। नो, वी ओनली थिंक पैसे इसके पास, हमें बस 10-15 लाख देके जॉब लगाना है एंड दैट्स हो जाता है, फिर एजुकेशन हो या ना हो। And seriously, these sexual abuse, they are actually looming so large. They are looming so large on high scale, and we are not stopping it. But वो आपने सही बोला कि जैसे टेक्नोलॉजी अभी के टाइम पे, and we are टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा रास्ता दिखाया, and like the initial, I think NGOs, we need to work on that. और फिर funding का भी फिर मसला है, where you can get that funding to just, you know, you need to support that. And I think government को भी they need to take initiatives around that. If you will, I'm not sure वहां पे कैसे होता है, I'm just trying to think hard about, जैसे नहीं होता है कि बिल पास करते हैं उसके लिए, I'm not sure how होता तो है ऐसे। गवर्नमेंट भी वैसे कुछ इनिशिएटिव सुना मैंने लेने वाली है इस पे, बट वही है ना, जब करप्शन वहां पे भी घुसेगी, करप्शन वहां पे भी आएगा तो रिपोर्टेड केसेस होंगे नहीं, अगर होंगे भी तो पुलिस डिपार्टमेंट उनको फिर अपने हिसाब से देखेगा, पैसे मिलेंगे तो वो
वो ना वो क्लीन चिट लेके निकल जाएगा, तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। इट्स बेटर कि आप कुछ यूथ में से ऐसे चुनो कि जो वाकई में काम करे, या कुछ सोसाइटी में ऐसे हर एक सोसाइटी में कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाओ जहाँ पे ये चीजें होती है, और वो जहाँ पे वो हैंडल कर सके। बिकॉज आप एक पुलिस स्टेशन पे छोड़ेंगे तो फिर कहाँ से आपको वो की चीजें मिलेंगी। इट्स बेटर कि डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले सकता है इस चीज के खिलाफ, एंड अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। बिकॉज जब भी एक बच्चा जो ये सर्वाइवल होता है, तो इसने बहुत कुछ देखा होता है बचपन से, उसका फिर माइंड भी उतना नहीं चलता, शार्पनेस भी उतनी नहीं, भी बहुत वीक हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे हम ही उसको फिर बोल बोल के इतना वो डिप्रेस कर देते हैं, तो वो सुसाइड करने में मजबूर होता है। दैट मीन्स इट अब्यूजिंग जो है, ये हर एक कॉज के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, चाहे फिर वो ड्रग्स लेना स्टार्ट करे, चाहे फिर वो चोरी करे, वट एवर इट इज। तो ये रूट कॉज है बेसिकली जो चाइल्ड अब्यूज होता है। तो एट द एंड मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, आई एम सो No, सॉरी। that's fine. It was lovely talking to you. It was lovely talking to you. Time तो तो पता ही नहीं क्या चला. मैसेज रहेगा आपका सोसाइटी की ओर, एंड हम जैसे यूथ, हम तो बहुत बात करते हैं लेकिन हम काम भी करते हैं, एंड स्टिल वी आर फेसिंग अ लॉट। तो क्या मैसेज रहेगा? Yeah, I think I would say to youth, you and me, and to everyone, और जो abusers है या जो victims, I'd say to victims, there's no point in quoting towards abusers. जो victims है, they need to stand by themselves. Don't let your confidence, don't let that down. और कोई अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, चाहे इमोशनल इन्फ्लुएंस है या चाहे प्रेशर है, चाहे आप एक पेज रन कर रहे हो, चाहे आप छोटे बच्चे को अब्यूज हो रहा है या व्हाटएवर, जस्ट वो होता है ना, यहाँ पे सवार मत करने दो, वो थॉट ही सवार मत करने दो, कहीं मैं तो नहीं गलत हूँ. बी ऑन योर, जस्ट स्टैंड विद योरसेल्फ एंड टॉक टू पीपल हु यू फाइंड दे आर uplifters rather than जो आपको लगता है कि it's unworthy and stuff like that. So I would say be what you are, and अगर आपने कोई बात की, अगर आप किसी चीज के खिलाफ खड़े हो गए या अगर आपने कोई इनिशिएटिव लिया, just don't back out. There's no point in backing out and turning around, and then there's no point. I would say be yourself and communicate as much as you could. And yeah, that's my 10 cents of advice, I would say. So okay, thank you so much. Thank you. It was lovely talking to Lovely you. conversation with you. Thank you so much. Yeah, thanks. You have a good आपका तो evening, मेरा तो night हो गया. चलो. You have a lovely evening. Okay, same to you. Good night. Allah Hafiz. Take care. Bye.